बहुप्रतीक्षित क्षणों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार शायद इस वक्त समूचा राष्ट्र बड़ी बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, ये इसरो का वही अभियान नियंत्रण केंद्र है जिसने 2008-2009 में पृथ्वी को चांद से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई थी। आज फिर से एक बार पूरी तैयारियों के साथ इतिहास रचने की कगार पर इसरो और उसका MOM। आज की सुबह का सूरज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐसी रोशनी लेकर आ रहा है जिससे आने वाली वैज्ञानिक नस्लों के अंधेरे जगमगा उठेंगे। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान की उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो, तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज मार्स कक्षत्र अभियान MOM के रूप में हर भारतीय के दिल में जागृत है। It has been a long journey since the launch of Mars orbiter mission aboard PSLV C-25 on 5th November 2013. It was a textbook launch. The Polar Satellite Launch Vehicle injected the Mars orbiter mission spacecraft into an elliptical parking orbit with an apogee of 250 kilometers, the perigee of 250 kilometers, an apogee of around 23,500 kilometers, and an inclination of 19.2 degrees. On September 24, 2014, the Mars orbiter spacecraft, after traveling 666 million kilometers, arrived at its destination in a hyperbolic trajectory. And from here, the orbiter will be inserted into the 372 by 80,000 kilometers elliptical orbit of Mars. Mars orbit insertion is a very critical maneuver which will be carried out with the combined visibility of 70 meters ground antennae located at Canberra and Goldstone, and the onboard medium gain antenna. It may be noted that Mars orbiter mission entered the sphere of influence of Mars on 22nd September 2014, and the final trajectory correction maneuver was carried out on the same day. Mars orbit insertion phase has demanded a large amount of preparation at spacecraft level. All the operations of Mars orbit insertion will be independently realized by the onboard processor by sequential execution of events without any ground intervention. The commands required for the same were loaded onto the satellite 9 to 10 days prior to this event, that is on September 14 and 15, 2014. Mars orbit insertion operation starts with changeover to medium gain antenna 3 hours prior to liquid engine burn start. This will be followed by forward maneuver 21 minutes prior to liquid engine burn, wherein the direction of satellite is changed and reoriented, pointing it to the desired thrust direction so that the spacecraft velocity can be reduced by a desired amount. The spacecraft is held in the same configuration for some duration. Star sensors updates are enabled after forward maneuver. 5 minutes 13 seconds prior to burn start time, the satellite is eclipsed by Mars, and hence the solar panels are unable to generate power as the sunlight is obstructed by Mars and doesn't reach it. In this case, the onboard lithium-ion 36 ampere-hours batteries will provide the requisite power by the spacecraft. However, the spacecraft is still in the line of sight of Earth and will receive data from it. Thus, 5 minutes 13 seconds into eclipse, the actual burn start event will occur. The criticality of Mars orbit insertion burn lies in the fact that the orbiter should get captured without crashing into Mars or without leaving Mars.
The liquid apogee motor is fired to slow down the orbiter's relative speed to the planet by 1,109 meters per second, and the velocity from 5.1 kilometers per second to 4.3 kilometers per second in relation to Mars. Getting anywhere between 200 kilometers and 11,000 kilometers will keep the orbiter in the Martian orbit. Nearly 4 minutes 20 seconds after the burn start, Mars occult starts. That is, the Mars orbiter will go behind the planet. As a result, no signal from the satellite will reach Earth for a considerable amount of time. Nearly 20 minutes past the burn start time, the orbiter is likely to come out of eclipse. And though the solar panels will start receiving the sunlight, it will continue to be operated on battery power. This is because the satellite is still not in the line of sight of Earth, and hence the switchover is not performed. The total duration of burn time is expected to be around 24 minutes. The satellite will come out from behind the Mars approximately 28 minutes after burn start. And that's when the occult will end and the satellite will once again be in the line of sight of Earth. The power generation from solar panel and telemetry will be resumed nearly 2.5 minutes after the end of occult, and data on Doppler measurement from the satellite is received, which will give the first information on the total burn performance. The reverse maneuver, wherein the satellite is once again reoriented, pointing the high-gain antenna towards Earth, starts 1.5 minutes to nearly 23 minutes after the end of liquid engine burn. The reverse maneuver ends nearly 11 minutes after the end of burn. With the resumption of high-gain antenna support, the Mars orbit insertion is completed. Thereafter, in the next 2 hours, the health parameters of the spacecraft will be verified, and the sequential operationalization of its 5 payloads will be carried out over a period of few days. Well, we just saw how the Mars orbit insertion is planned to make the MOM enter into an elliptical orbit about Mars. But why Mars? Mars, the red planet, tugs at the human imagination like no other planet. Visible to the naked eye, Mars has a lot of features similar to Earth. Like a Mars solar day is 24 hours, 39 minutes, 35 seconds. Yes, very close to the day period on Earth. The axial tilts are also comparable, as a result of which Mars has seasons much like Earth. Even the surface features of Mars closely resemble that on Earth and Moon. Recent observations also confirm the presence of water ice on Mars. However, having said this, there are also quite a few dissimilarities. To mention a few, Mars is much smaller than Earth, its diameter being half of Earth. Mars has a very thin atmosphere, only 0.7% of Earth's atmosphere, and that too consisting mainly of carbon dioxide. Surface gravity of Mars is only 38% that of Earth. And due to its distance from the Sun and the thin atmosphere, the thermal conditions are also very different from Earth. Still, Mars inspires visions of an approachable world. For ages, humans have been speculating about life on Mars, but the question that is still to be answered is whether Mars ever had an environment in which life could have evolved and sustained. The red planet of the universe, the Mars, is our closest cousin. Mars can easily be seen from Earth with the naked eye because of its reddish coloring acquired due to the iron oxide prevalent on its surface. The 4th planet from the Sun, Mars is also the 2nd smallest planet in the solar system. Mars's average distance from the Sun is roughly 230 million kilometers, and its orbital period is 687 Earth days.
Mars has a relatively pronounced orbital eccentricity. The solar day on Mars is only slightly longer than an Earth day, 24 hours, 39 minutes and 35.244 seconds. A Martian year is equal to 2 Earth days. The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of Earth, as is the tilt that produces the seasons. The axial tilt of Mars is 25.2 degrees, which is similar to the axial tilt of the Earth. The lengths of the Martian seasons are about twice those of Earth's because Mars' great distance from the Sun leads to the Martian year being about 2 Earth years long. Mars has 2 moons, Phobos and Deimos, which are small and irregularly shaped, which orbit close to the planet. Because the orbit of Phobos is below synchronous altitude, the tidal forces from the planet Mars are gradually lowering its orbit. In about 50 million years, it could either crash into Mars's surface or break up into a ring structure around the planet. The origin of the 2 moons is not well understood. Mars has approximately half the diameter of Earth. It is less dense than Earth, having about 15% of Earth's volume and 11% of the mass. Its surface area is only slightly less than the total area of Earth's dry land. The surface gravity of Mars is only about 38% of Earth's. Mars has a thin atmosphere consisting of about carbon dioxide, argon and nitrogen along with traces of oxygen and water. Methane has also been detected in the Martian atmosphere. Martian surface temperatures vary from lows of about -128 degrees Celsius to highs of up to 27 degrees Celsius. The wide range in temperatures is due to the thin atmosphere, which cannot store much solar heat, the low atmospheric pressure and the low thermal inertia of Martian soil. Mars has surface features reminiscent both of the impact craters of the Moon and the volcanoes, valleys, deserts and polar ice caps of Earth. Mars is the site of Olympus Mons, the second highest known mountain within the solar system, tallest on a planet. And the Wales Marina is one of the largest canyons. Landforms visible on Mars strongly suggest that liquid water has at least at times existed on the planet's surface. Recent studies, however, suggest that liquid water cannot exist on the surface of Mars due to low atmospheric pressure. Mars has 2 permanent polar ice caps. The polar caps at both poles consist primarily of water ice. Mars also has the largest dust storms in the solar system. These can vary from a storm over a small area to a gigantic storms that cover the entire planet. They tend to occur when Mars is closest to the Sun and have been shown to increase the global temperature. Mars, which is our closest cousin, has fascinated the sky watchers and space explorers since ancient times and hence attempted to reach. जी हाँ, यही कुछ जानकारियां थीं जो समूचे विश्व ने लाल ग्रह के बारे में एकत्रित की थीं। कई बार हम सबके जहन में ये सवाल उठता है कि आखिर मंगल ही क्यों? वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के जिस स्वरूप से परिचित हैं उसी की खोज के प्रयास भी कर रहे हैं। चंद्रमा पर तो वायुमंडल है ही नहीं। मरकरी यानी बुध सूरज के अत्यंत नजदीक होने के कारण एक तरफ बेहद गर्म रहता है और दूसरी तरफ बिल्कुल ठंडा। जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि और यूरेनस तथा नेपट्टून ग्रह सूर्य से इतनी दूर हैं कि वहां जीवन की ऊष्मा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ले देकर हमारे पास सौर परिवार के 2 ही सदस्य बचते हैं, मार्स यानी मंगल और वीनस यानी शुक्र। मंगल ग्रह पर 1960 से लेकर अब तक अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप एवं जापान ने अनेक कक्षीय यान, अवतरक व रोबोटों को भेजने में सफलता हासिल की है। इन सभी अभियानों का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों के अधिकतम आंकड़े एकत्रित करना एवं न सिर्फ मंगल पर मानव युक्त यान की संभावना तलाशना था, बल्कि पृथ्वी के भविष्य के प्रति चिंता भी थी। अगर हम मंगल ग्रह के विश्व अभियानों की बात करें तो इनकी सफलता मात्र 42% है। कई अभियान आरंभिक दौर में
कई यात्रा के दौरान, कई गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। कई अभियानों ने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया। ये सारी असफलताएं अभियान की जटिलता और अंतर्ग्रहीय अभियानों में प्रयुक्त अनेक प्राचलों की ओर इशारा करते हैं। इस लाल ग्रह के अन्वेषण में मार्स एक्सप्रेस, MRO, मार्स ओडिसी, ग्लोबल सर्वेयर, मैरिनर और वाइकिंग जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। एक तरफ कई ऐसे अभियान थे जिन्होंने नमूने वापसी की परियोजना पर काम किया था, तो दूसरी ओर लैंडर और रोवर के आधुनिकतम स्वरूपों जैसे क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी ने नित्य नई खोजों से सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। धीरे धीरे मैरिनर और वाइकिंग की तुलना में छोटे और इसकी तुलना में सस्ते और निश्चित रूप से तेज उपग्रहों की अभिकल्पना और निर्माण के दौर में बेहतर विकल्प हासिल किए हैं। मंगल अभियानों के प्रकार और असफलता दर पर अगर हम एक निगाह डालें तो पाएंगे कि करीब करीब अगर हम फ्लाई बाय मिशंस की बात करें तो 11 अटेम्प्ट किए गए, 5 सफल रहे, 4 लॉन्च प्रक्षेपण पथ पे ही फेल हो गए थे और 2 रास्ते में फेल हो गए, मतलब करीब 45% दर। ऑर्बिटर 50% दर के साथ अगर 22 प्रयास किए गए तो करीब करीब 9 सफल रहे, 2 आंशिक रूप से सफल रहे, 5 फेल हो गए और 3 फेल्योर रूट पे हो गए, रास्ते पे हो गए। इसी तरीके से लैंडर 30% की दर रही इनकी, करीब करीब 10 प्रयास किए गए, इसमें से 3 सफल रहे, 3 रास्ते में और 4 ऑर्बिट में कक्षा में पहुंचने के बाद असफल हो गए। रोवर 57% की दर से सफलता हासिल की, 7 प्रयास रहे, 4 सफल रहे, 1 और इसी तरह से सैंपल रिटर्न रहा। इस तरीके से The missions to Mars started as flybys and then evolved into orbiter. Orbiter plus lander, orbiter plus lander plus rover. Direct landing of lander plus rover. The first successful flyby of Mars was on July 14 and 15, 1965 by Mariner 4. This flyby spacecraft returned 21 photos. The data showed life would have a more difficult time surviving there than previously anticipated. Subsequent flybys, Mariner 6 and 7, Mariner 9 returned 75 photos, 126 photos and 7,329 photos respectively. The amount of data returned by the spacecraft increased dramatically as technology improved. On November 14, 1971, Mariner 9 became the first space probe to orbit another planet when it entered into orbit around Mars. The first to contact the surface were 2 Soviet probes, Mars 2 lander on November 27 and Mars 3 lander on December 2, 1971. The images and data enabled creation of surface relief maps and gave information on the Martian gravity and magnetic fields. The Soviet probes Phobos 2 was sent to Mars in 1988 to study Mars and its 2 moons with a focus on Phobos. Phobos 2, while successfully photographing Mars and Phobos, failed before it was set to release 2 landers to the surface of Phobos. The Mars orbiter Viking 1 operated from June 1976 to 1980 and Viking 2 operated from August 1976 to 1987. Combined, the Viking orbiters and landers returned more than 50,000 photos. The Mars orbiter Mars Global Surveyor reached Mars on September 12, 1997 and transmitted its last communication on November 2, 2006. The spacecraft returned more than 240,000 camera images, 206 million spectrometer measurements and 671 million laser altimeter shot. Mars Pathfinders, Lander Sojourner and Rover Phoenix landed on July 4, 1997 and communicated with ground teams last on September 27, 1997. The Mars orbiter Mars Odyssey arrived on October 24, 2001 and is currently conducting its extended science mission. The spacecraft has returned about 350,000 images, mapped global distributions of several elements and relayed
more than 95% of all data from the Spirit and Opportunity rovers. The Mars orbiter, launched by European Space Agency's Mars Express Beagle 2, completed its prime mission in November 2005 and is currently on an extended mission. Mars Reconnaissance Orbiter began orbiting the planet on March 12, 2006. The spacecraft has provided data that include more than 25,000 images and 3,500 radar observations. The mission has returned more total data than produced by all previous Mars missions combined. Rosetta came within 250 kilometers of Mars during its 2007 flyby. Dawn flew by Mars in February 2009 for a gravity assist on its way to investigate Vesta and Ceres. Mars is host to 5 functioning spacecraft, 3 in orbit, the Mars Odyssey, Mars Express and Mars Reconnaissance Orbiter, and 2 on the surface, Mars Exploration Rover Opportunity and the Mars Science Laboratory Rover Curiosity. The liquid engine burn is scheduled to begin in a few minutes from now. Before the burn, the spacecraft will be rotated to go to the desired orientation for the MOI maneuver. As you saw earlier, basically it is required that when the liquid engine fires, the thrust or force that it produces should act as brakes and oppose the moving velocity of the spacecraft so that it slows down sufficiently enough to be captured into an orbit around Mars. For that, the spacecraft has to be rotated from its present orientation so that the liquid engine points along the negative velocity vector. The target orientation has already been loaded on board. The software program for scheduling the events for this burn, called the LEB sequencer, will fetch the target orientation from the memory. The controls system, called the brain of the spacecraft, will see to it that the reaction wheels rotate the spacecraft by the required amount about the 3 spacecraft axes so as to reach the desired orientation. This is called the forward maneuver, planned to be done 21 minutes before burn start. The forward maneuver has actually begun on the spacecraft. Owing to the distance between spacecraft and Earth, the one-way delay for the telemetry to reach the ground is around 12.5 minutes. So the confirmation about the spacecraft forward maneuver in ground telemetry will be at 7:09 a.m. जी हाँ, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस समय हम प्रज्वलन से केवल 21 मिनट 3 सेकंड की दूरी पर हैं। सारी गतिविधियां अबाध रूप से स्वायत्तता के तरह जारी हैं। फॉरवर्ड रोटेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अनुराधा बता रही थी कि एक्लिप्स या ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मॉम के कक्षीय प्रवेश हेतु मार्ग प्रशस्तीकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वे हैं आज से 2 दिन पूर्व 22 सितंबर को तरल इंजन का 3.968 सेकंड में प्रज्वलन, जिसमें लगभग 500 ग्राम ईंधन की खपत हुई, जो कुल मात्रा का नगण्य भाग है, और वेग में लगभग 2.142 मीटर प्रति सेकंड की कमी आई। पर उससे लगभग उपलब्ध आंकड़े आज के घटनाक्रम हेतु बेहद महत्वपूर्ण हैं। दरअसल लगभग 300 दिनों पूर्व प्रयुक्त द्रव इंजन का उपयोग दूसरी बार उपग्रह के मार्स सुधार में प्रयुक्त होने जा रहा है। इसरो के किसी भी अभियान में यह पहला प्रयास होगा। हमें आपको बताते हुए काफ़ी खुशी होती है कि इसका निष्पादन अपेक्षित था और बेहद उत्साहजनक परिणामों ने हमारे विश्वास को और दृढ़ता प्रदान की है। दरअसल इस मार्ग सुधार का मुख्य उद्देश्य था तरल ईंधन के प्रयोग का पूर्वाभ्यास और उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करना। समय का चयन केवल इस बात का द्योतक है कि इतने समय अंतराल में हम पिछले प्रज्वलन के तुलनात्मक अध्ययन से तरल इंजन के अभिलक्षण को किस हद तक प्रयोग में ला सकते हैं। दिनांक अर्थात 22 सितंबर का चयन भी यूं ही नहीं था। 24 तारीख के इतने करीब होने का इस कारण ये था कि अगर खुदा न खास्ता प्लम्ब लाइंस
कहीं कोई भी रिसाव लेकर सामने आती है तो उसके दोनों प्रभाव अर्थात नगण्य कक्षा परिवर्तन और ईंधन की बर्बादी से बचा जा सकता है। दूसरे अल्पतम प्रचारण अनिश्चितता प्रोपगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी भी कम हो जाएगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही शीघ्र आप सभी के बीच पहुंचने वाले हैं और इस घटना के हमारे साथ, हमारे आपके साथ, संपूर्ण राष्ट्र के साथ साक्षी होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। ये वो घड़ी है जब देश के प्रधानमंत्री आप सबके बीच हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे कई मौके आए जब गणमान्य अतिथि हमारे सामने आए हैं। इसरो के चेयरमैन श्री के राधाकृष्णन जी उनके स्वागत के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी कार से उतरते हुए आपके स्क्रीन पर उनके स्वागत में गुलदस्ता पेश किया गया और इस तरीके से उन्होंने हमारे स्वागत को, हमारे फूलों को स्वीकार किया और हम उन्हें अपने मार्स कक्षा के नियंत्रण केंद्र में हम उनका बेहद स्वागत करते हैं। मैं इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से प्रथम अंतर्ग्रहीय अभियान MOM के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। MDOD, please note up to 0145 telemetry data break is observed. प्रधानमंत्री जी अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए ताकि वो हमारे बीच उपस्थित हो सकें। आइए आगे की कार्यवाही देखते हैं। इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि 22 तारीख को जो भी कुछ घटा, जो भी लैब ने परीक्षण किया, ताकि उन 4 सेकंड को कैसे हम समीक्षित करके उनका उपयोग कर सकें। इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस सारी गतिविधियों पे नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, उन आंकड़ों का विस्तार पूर्वक समीक्षा कर सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हर उन आंकड़ों का गहन अध्ययन किया जाता है। 22 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 4 सेकंड के लिए दूसरी बार पुनः उपयोग के लिए लैंप का तरल इंजन का परीक्षण किया गया ताकि हम 24 तारीख के प्रज्वलन के लिए निर्णय ले सकें। तब बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हम उन आंकड़ों पर कड़ी नज़र रखें, उनकी विवेचना करें, विशेषज्ञों की सलाह लें और किस तरह का निर्णय लेना है उसकी भी तुलनात्मक अध्ययन करें। दरअसल उसके पहले हमारे पास प्लान ए और प्लान बी मौजूद थे और इसके लिए बेहद आवश्यक था कि उन निर्णयों को जानकारी के लिए आंकड़े हमारे सामने हों। हमारे सामने जब आंकड़े आए तब सारा वैज्ञानिक समुदाय बेहद गर्वान्वित महसूस किया। उन्होंने जितने भी भू परीक्षण किए थे वो भू परीक्षणों के साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में 488 घंटों का जो परीक्षण किया गया, जो संचयन करके और परीक्षण किया गया था, उसके परिणाम की भी विवेचना हुई। विशेषज्ञों द्वारा उसकी भी जानकारी प्राप्त की गई और तब ये सुनिश्चित किया गया कि बिल्कुल हमारी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन की टीम है वो केवल प्लान ए के अनुरूप काम करेगी और पूरे विश्वास के साथ इस अभ्यास पे खरी उतरेगी। Yes, Dr. Alok, the results of the liquid engine test firing on 22nd September, 41 hours before the start of the Mars orbit insertion maneuver, the results were very heartening. The liquid engine sprung to life after lying dormant for nearly 300 days and gave results up to 99.6% efficiency. Firing for a duration of 3.968 seconds, the delta velocity achieved was 2.167 meters per second. Based on these test results, it was confirmed that we could go ahead with the prime plan, Plan A, in which the liquid engine would fire along with the 8 thrusters and they would fire simultaneously to achieve the required delta V. जी हाँ,
मुझे अच्छी तरह याद है वो घड़ी जब इसरो के ऐसे ही एक Interplanetary missions like Mars Orbiter mission operating at considerable distance from Earth require autonomy and automation. Communication link is the main challenge in Mars mission, as the antennae on board satellite should continuously be pointing towards Earth, which can prove to be very critical to maintain when the spacecraft is million miles away into the deep space. This is achieved by gyros and sensors that determine the relative position of the spacecraft with respect to the Earth, Sun and star constellation. Hence, when communication interruptions occur, then the onboard autonomy is built into the spacecraft, wherein various operations are independently performed by the satellite based on the software loaded onto it. On an average, it would take approximately 28.4 minutes for a signal to travel from Earth to Mars and back to Earth. In such a scenario, because of communications delay, the mission support personnel on Earth will not be able to easily monitor all the spacecraft systems of the orbiter in real-time basis. Thus, in the interest of efficient use of mission time, the Mars orbiter using the onboard autonomy has operated independently from ground controllers for the majority of a mission, communicating with the Earth only few times. During the Mars orbit insertion phase, Mars orbiter spacecraft will occult, that is, it will go behind the Mars few minutes after the burn start time. In such an event, the communication between ground station and the spacecraft will not be established for a considerable amount of time. Hence, mission automation becomes crucial here. A proper timeline for all onboard and ground operations for all the Mars orbit insertion events was prepared on ground and loaded onto the spacecraft on September 14, 2014. That is 10 days prior to the entire Mars orbit insertion event. Mars orbit insertion operation starts with forward maneuver, then actual burn followed by the reverse maneuver. All this is independently realized by the onboard TCP and AOCE processor by sequential execution of events without any ground intervention. When the spacecraft goes behind the red planet, it is also expected to independently micromanage itself. If need be, recognize problems aboard the spacecraft and fix it automatically. Similarly, the payload operations will be realized through the execution of onboard events which have been preloaded. During its orbital stay, the Mars orbiter spacecraft will experience communication blackout when the Sun will be between Earth and Mars. No data link can occur for that period of time. The maximum duration of the blackout is around 17 days. In addition, the orbiter will experience communication whiteout when the Earth is between Sun and Mars, and too much radiation may make it impossible to communicate with Earth. The maximum duration is 14 days. The onboard autonomy will take over the functionality of the spacecraft during the entire period of blackout and whiteout. उपग्रह के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के पश्चात अनवरत रूप से बदलती हुई परिस्थितियों और सौर अभिवाह में पतन के कारण एक तो ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है और दूसरे उपग्रह में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। हम कुछ क्षणों के लिए ये मान भी लें कि ऊर्जा की उपलब्धता है, तो दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेडियो संकेत और दूरादेश के प्रेषण और प्राप्ति में लगभग 24 से 42 मिनट तक का समय लगेगा। उपग्रह के स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे आंकड़ों और प्राचलों के एक नियत सीमा में बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वायत्तता या ऑटोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया गया था इस उपग्रह पर, और इसी कारण से इस उपग्रह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन सारे परिवर्तनों के साथ ये उपग्रह आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बन गया था। इसी तरह की स्वावलंबन के पश्चात हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुईं।
जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये लाइव टेलीकास्ट facebook.com/isro, twitter.com/isro के साथ साथ इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर भी उपलब्ध है। साथ ही webcast.isro.gov.in पर आप इस संपूर्ण घटनाक्रम को देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, I have a very pleasant surprise for you regarding the Mars Orbiter mission, the country's first interplanetary mission. You can watch it live now on facebook.com/isro, twitter.com/isro, as well as on ISRO's official website, isro.gov.in, and look for the webcast.isro.gov.in. Join us for this hair rising event now and enjoy the national pride event. In fact, आप इस समय अपने स्क्रीन पर महानुभावों को देख पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री कर्नाटक के प्रोफेसर U.R. राव, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, उन सभी को आप बाकायदा देख पा रहे होंगे। इस समय हम प्रज्वलन से केवल 7 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर, इतने अभ्यास के बाद एक चीज़ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस केंद्र में, इस संपूर्ण हाल में, कि कहीं पे तनाव नहीं है। हाँ, उत्तेजना जरूर है इस बात की कि हम कितनी जल्दी इसे प्राप्त कर पाएँ, कितनी जल्दी इन घटनाओं को हासिल कर पाएँ। मैं आपसे बता रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है वो घड़ी जब इसरो के ऐसे ही एक महत्वपूर्ण क्षण में श्रीहरिकोटा में यान प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया था और उत्साहवर्धन हेतु एक लंबा वक्त हमारे साथ व्यतीत किया था। माननीय महोदय, हम आपके साथ साथ हमारे बीच उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले क्षणों का साक्षी बनने हेतु हम अपने को कृतज्ञ महसूस करते हैं। इस समय आप केंद्र में उपस्थित इस सभागार में बाकायदा वरिष्ठ वैज्ञानिकों को देख पा रहे होंगे, जो इस समय सभी आंकड़ों का बेहद बारीकी से, सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए, ताकि कहीं पे भी कोई भी छोटी सी छोटी गलती हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। इस समय हम करीब करीब 6 मिनट 25 सेकंड की दूरी पर, और जब हमारा प्रज्वलन प्रारंभ होगा, इस समय हम आपको The Mars Orbiter mission had brought many new challenges before the scientists when the entire mission was being planned, designed, and conceived. In comparison to any other mission undertaken by ISRO so far, the Mars Orbiter mission had several mission-specific challenges. The bus needs to cope with a wide range of thermal environment, ranging from near-Earth conditions with Sun and Earth contribution to Mars conditions, where eventually eclipses and reduced solar flux give rise to cold issues. The mainframe bus elements and payloads are specifically designed for interplanetary mission capabilities of operating in Earth-burn maneuvers, Mars transfer trajectory, and Martian orbit environments. The power system has to support the spacecraft and payloads during various phases of mission, like launch phase, geocentric, heliocentric, and Martian orbit phase. The power system consists of power generation, energy storage, and power conditioning elements. One of the major challenges in the design of power system is due to the large distance of the satellite from the Sun. The power source for the Mars Orbiter mission is its single solar array wing, which converts solar energy into electrical energy by photovoltaic conversion. A single 36Ah lithium-ion battery in series parallel configuration is used in Mars Orbiter mission. What they are advising is
for a mission of this nature. But as is said, the moment you stop accepting challenges is the moment you stop moving forward. And the entire MOM team faced the challenge head-on and prepared for all eventualities. As a result, today, at this moment, we wait with bated breath for the most critical event to begin, the actual Mars orbit insertion, the MOI maneuver itself. Dr. Alok, here I would like to remind the viewers that the entire sequence of operations as per the finalized plan for MOI was uplinked to the spacecraft 10 days earlier. The operations are being carried out automatically by the LEB sequencer. बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी. और कुछ जानकारी? Yeah, we want the burn to be centered around the periapsis, that is the closest approach point to Mars. This will give us the best result with the least fuel spent. So the start time of the burn becomes very important. And the start of Mars orbit insertion maneuver is 7:17:32 a.m. IST. Actually, the MOI maneuver must have already started on the spacecraft. We will be getting the confirmation of this event on the ground after about 12.5 minutes of the delay, which is the one-way communication delay from the spacecraft near Mars to Earth. So we would be confirming the burn start at 7:30 a.m. The velocity of the MOM spacecraft is required to be reduced from 5.1 kilometers per second to 4.3 kilometers per second with respect to the Mars planet during this maneuver to achieve a proper trajectory. To achieve this, the major part of the thrust or force required to slow down the spacecraft is provided by the liquid engine. It will be assisted by the 8 thrusters, which would also be firing along. The required delta velocity to be imparted is 1098.7 meters per second. And this is expected to be achieved with a nominal burn duration of 1,454 seconds, that is 24 minutes and 14 seconds. The achieved delta velocity will be sensed by the onboard accelerometer, which will terminate the firing when the targeted velocity is reached. बिल्कुल सही है. और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हम इस समय उपग्रह में मंगल ग्रहण में पहुंच चुके हैं और उसमें हम करीब 3 से 4 मिनट के बीच का समय व्यतीत करते हुए, और इस समय सौर ऊर्जा का पूरी तरह से अभाव है और बैटरी पूरी तरह से लोडेड हो चुकी है. इनफैक्ट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम केवल 1 मिनट 7 सेकंड की दूरी पर हमारी धड़कनें इस समय गिनी जा सकती हैं. इस हाल में उपस्थित जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सारी निगाहें केवल आंकड़ों पर, क्योंकि सारे आंकड़े उपग्रह अपने आप स्वायत्तता के हिसाब से लेता जा रहा है और गतिविधियों को अंजाम देता जा रहा है. आपको शायद वो घड़ी याद हो जब पिछली बार उपग्रह में लगे 440 न्यूटन वाले तरल इंजन का प्रयोग किया गया था. जी हाँ, लगभग 300 दिन पहले, और उसके बाद उसके सभी वाल्वों को बंद कर दिया गया था. दरअसल इसका मुख्य कारण है रिसाव की संभावना, क्योंकि तरल इंजन में केवल सोलेनॉइड वाल्व होता है, जबकि एओसीएस में इस वाल्व के साथ साथ आइसोलेशन लैच वाल्व का भी प्रयोजन होता है. इसीलिए दूसरा कारण सोलेनॉइड वाल्व में प्रयुक्त पदार्थ लंबी अवधि तक मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के संपर्क में आने से कुछ फूल जाता है, जिससे द्रव प्रवाह में उत्पन्न बाधा से ज्वलन प्रभावित हो जाता है. The spacecraft adopts a bipropellant system to carry it from geocentric phase to Mars orbit phase through the heliocentric phase, including orbit and attitude maintenance in Mars orbit. The propulsion system carries the required propellant from the desired mission life with adequate margin. The spacecraft propulsion subsystem is designed for attitude and orbit control during the different phases of the spacecraft mission and orbit raising operations such as transfer orbit, orbit raising.
Yes, there's the confirmation of the burn start, and the entire scientific community gathered here have erupted into claps. The accelerometer has now shown a delta V of 23.4 meters per second, and the burn has started as per the exact timeline, and it is slowly inching towards the desired delta V of 1098.7 meters per second. इस समय हम लगभग 1 मिनट 22 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं जब हमारा प्रज्वलन तरल इंजन का आगे बढ़ चुका है। इसरो के चेयरमैन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के निदेशक महोदय, ये आप चित्रांकन देख पा रहे हैं जब लैम 440 न्यूटन का उसके साथ एओसी प्रणोदन जो प्रणोद हैं वो भी फायर करते हुए। इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है इन सभी का निष्पादन। Now there is another important event going to happen during this burn. This is due to the geometry of Earth, Mars and MOM. Earlier, there was an event, eclipse event, when Mars came in between MOM and the sun rays couldn't reach the spacecraft and it was in eclipse. Now consider the Earth to MOM link, which makes communication between the two possible. During the firing, the path of MOM will go behind Mars planet. It implies that Earth, Mars and MOM spacecraft are nearly in one straight line. Or in other words, MOM is hidden by Mars from the ground station on Earth. This is called occultation. And the occultation of MOM by Mars will start around 4.5 minutes after the start of the maneuver, that is around 7:34 a.m. on the ground. So ground station will not be able to receive any spacecraft telemetry which the MOM sends during this occult period. In terms of the delayed reception on the ground, we will be getting spacecraft telemetry till about 7:34 a.m. The occultation extends for about 24 minutes, that is 3.5 minutes beyond the expected end of burn. However, we would have to wait for another 2.5 minutes to get spacecraft telemetry, till the MGA communication antenna establishes a link with the Earth ground station. So the expected telemetry break is for about 26 minutes, that is from 7:34 a.m. to 8 a.m. जी हाँ अनुराधा जी, ऑकल्ट की स्थिति में भू केंद्र और उपग्रह के बीच संकेतों के आदान प्रदान में रुकावट आ जाती है, किंतु उपग्रह के परावलय पथ का ये वो हिस्सा है जहां तरल इंजन के प्रज्वलन को हर हाल में प्रज्वलित होना पड़ता है। सवाल उठता है कि कैसे? इस तरह से आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे प्रज्वलन लगातार जारी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल ही लिया। एलपीएससी के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जब उड़ान की सभी परिस्थितियों का अनुकरण करते हुए हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हैट में 2 तरल इंजनों का निर्वात कक्ष में 485 दिनों के संचयन के पश्चात इनलेट की परिस्थितियों को अनुकरित कर परीक्षण किया तो वो बेहद उत्साहवर्धक था। अब बारी आई 22 दिसंबर की, जब उपग्रह को ऐसे ही परीक्षण के लिए लगभग 4 सेकंड के परीक्षण से गुजारा गया और तब ये सुनिश्चित हो गया कि हाँ, हम ऑकल्ट की स्थिति में पूर्ण स्वायत्तता के साथ प्रज्वलन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर सकते हैं। इस समय हम करीब करीब 4 मिनट 50 सेकंड प्रज्वलन का व्यतीत कर चुके हैं और ग्रहण समाप्त होने के लिए करीब करीब 14 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। MOM को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराना था तो ग्रहण की उपस्थिति में इसे और भी संकटपूर्ण बना दिया, पर इस समस्या से जूझने के लिए भी वैज्ञानिकों ने पावर को कम किया और औसतन 850 वाट से घटाकर मात्र 320 वाट रह गया। ये बेहद आवश्यक था। इसके लिए एक ट्रांसपॉन्डर करीब करीब 440 वाट और एक ट्रांसमीटर करीब 30 वाट और करीब करीब 60 वाट के तापक या हीटर को भी स्विच ऑफ कर दिया गया और इस तरह से इतनी कठिन घड़ी के मार्स ऑर्बिटर इंसर्शन को वैज्ञानिकों की सोच, परिश्रम और लगन ने आसानी से हल कर दिया।
आप प्रोफेसर यशपाल को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम लोग प्रज्वलन को बाकायदा देख पा रहे हैं। 5 मिनट 57 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं और हम लोग 13 मिनट 27 सेकंड दूर पे। Orbit can be seen as the path for the satellite, and it has some complexities. This certainly is a matter of concern for the scientists. To be able to meet these challenges, certain innovative solutions have been devised. It all starts with the launch itself. The launch vehicle needs continuous tracking. The major landmarks or mission phases in Mars orbiter mission can be categorized into 3 phases, namely the Earth-bound or geocentric phase, heliocentric or cruise phase, and the Mars orbit phase. The prime responsibility to monitor and ensure the performance of the satellite in all the phases of the mission lies with the ISRO Satellite Telemetry, Tracking and Command Center, that is, ISTRAC, situated at Bangalore. As the vehicle traveled through the atmosphere, its first stage and the strap-ons burned and separated from the vehicle, and subsequently the second stage liquid engine took over. When the vehicle moved away from the atmosphere, the heat shields separated and the second stage handed over the flight to the third stage. All these operations were technically complex, and their successful completion underlines the reliability of the system. During the first 3 stages of the flight, ISTRAC downlink stations located at Bangalore, Sriharikota, Port Blair, Brunei and Biak tracked the vehicle and continuously delivered the vehicle telemetry to the control center. Here again, the information on the path of the launch vehicle was crucial. The rocket then entered a long course phase of unpowered hyperbolic trajectory for a duration of about 26 minutes. When the vehicle was out of sight from the Biak ground station, there was a gap of 10 minutes where it was not visible on the monitors of any of the ground stations. To manage and handle this very challenging blind period, elaborate planning was done. When ground stations were not in a position to track the vehicle, 2 ships, Nalanda and Yamuna, were employed with onboard tracking antenna at Western Pacific Ocean. To have these 2 ships for tracking was so crucial and important for the mission that the date of the launch of the mission had to be rescheduled, as initially these ships could not reach the pre-identified location due to bad weather. The ships were equipped with state-of-the-art indigenous transportable terminals, a technological marvel developed in our country. These are only 2 of its kind and were engaged exclusively for the mission. Subsequently, all went as planned. The antennas provided necessary telemetry and tracking data to monitor the critical events of the vehicle. The first ship was located at such a position where it could monitor the ignition of the 4th stage liquid rocket engine. The location of the second ship was carefully chosen to monitor the burnout of the 4th stage and satellite separation. At the end of the flight, the spacecraft was injected successfully in the designated orbit around the Earth. Then started the Earth-bound phase to achieve the Trans-Mars insertion operation. Here it was required to raise the apogee altitudes in every successive orbit with proper velocity and thrust. It was challenging, critical and complicated. This was successfully achieved by a series of orbit maneuvers by firing onboard liquid apogee motor, that is LAM. At the end of the maneuver, the apogee of the orbit was raised to a higher altitude. Following this, the spacecraft reoriented itself to its normal orientation. This is known as reverse rotation. It would be interesting to note at this juncture
that the autonomous fault detection and recovery programs loaded in the onboard flight computer, which are crucial for successful operation of the Mars orbit insertion, that is MOI maneuver, were enabled and successfully tested in the Earth burn maneuver one after the other. During Earth burn 4 maneuver, that is EBN 4 maneuver, one of the features was tested for the first time, which resulted only into partial burn. It was corrected with subsequent EBN 4A. The required commands for this operation were given from the ISTRAC Mission Operations Complex. At the end of EBN 5, the apogee altitude was at 1,92,000 kilometers or around 2 lakh kilometers. The sixth and final transmass injection maneuver, conducted on 1st December 2014, injected the spacecraft into a hyperbolic departure trajectory. After the sixth maneuver, spacecraft gradually moved away from Earth on 3rd December 2013. It escaped from the Earth's sphere of influence. From there on, the spacecraft went on a heliocentric journey. The spacecraft was initially traveling ahead of Earth in heliocentric path. In March 2014, the Earth crossed over naturally ahead of the spacecraft. On April 8, 2014, Mars orbiter mission crossed the halfway mark of around 335.5 million kilometers, and on April 24, 2014, the spacecraft was at an equal distance from Earth and Mars, that is 51.3 million kilometers. The spacecraft was behind the planet Mars initially. After May 12, 2014, it overtook the Mars and started voyaging ahead. To determine the progress of the satellite, Indian Deep Space Network BILALU was engaged. They have used different measurement techniques that are used for orbit determination of Mars orbiter spacecraft. These are the ranging method, Doppler method, and delta differential one-way ranging known as delta DOR. The delta DOR measurements are used mainly in cruise and Martian phase. Orbit determination is carried out with a set of range rate, angle, and delta DOR data received from the tracking stations for the purpose of orbit prediction and further orbit maintenance within the mission prescribed limits. For the determination of distance, propagation time of a radio signal between the ground station and the satellite is measured. A ground station transmits a radio signal towards the satellite at a specific time. The same signal reflected by the satellite returns to the ground station. From this time delay, the distance between the ground station and the satellite can be estimated. Another technique is called Doppler ranging. The Doppler effect is the science of observing the change in the transmitted and received frequencies. For example, a passing vehicle produces different sounds at different distances from a stationary observer. This principle is applied for measurement of the distance between Earth and Mars orbiter spacecraft. By observing the difference or shift in frequencies due to relative motion between the satellite and the ground station, we can estimate this distance. The third technique is delta DOR. The delta DOR technique requires acquisition and recording of signal coming from the spacecraft and a nearby quasar. The measurement requires that the same quasar and spacecraft be tracked essentially simultaneously from two ground stations that are separated from each other during a given tracking pass. The angular position of the satellite can be found out by measuring the delay between the signals received by the two ground stations. The data obtained from similar measurements carried out with the quasar, taking it as a fixed reference, is used as correction
for the satellite-related measurement. Thus, an overlap between two tracking stations is required to perform delta door measurement. Typically, one session of D-door measurement consists of these sequential measurements: spacecraft, quasar, spacecraft, or quasar, spacecraft, quasar. Typically, each measurement lasts up to 10 to 15 minutes. With these kind of techniques, we can estimate the distance and command the satellite to follow the prescribed path. All of these mission activities are being controlled by Indian Deep Space Network, that is IDSN, and the Mission Control Center located at ISTRAC, Bangalore. इस समय हम अपने स्क्रीन पे सभागार के अंदर की सारे व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं। प्रज्वलन के ऑलमोस्ट 16 मिनट 52 सेकंड बीत चुके हैं और सबसे नज़दीक की महत्वपूर्ण घड़ी जो है वो अकल्ट की है। इस समय केवल 2 मिनट 27 सेकंड की दूरी पर। यही अनुमानित समय है जब हमें अकल्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसकी घोषणा होगी और इसके साथ ही हमें ये भी अंदाज़ हो जाएगा कि प्रज्वलन के बाद आंकड़ों की प्राप्ति कैसे हो। हमारे बीच संपूर्ण देश से, संपूर्ण राष्ट्र से विशेष अतिथि हमारे बीच इस महत्वपूर्ण घटना के साक्षी हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं कि वो हमारे बीच आए और हमारे लिए निश्चित रूप से ये बड़े गर्व का विषय है, क्योंकि उत्साहवर्धन में आपकी उपस्थिति हमें बेहद उत्साहजनक परिणाम देती है। इस समय करीब करीब 18 मिनट करीब होने जा रहे हैं प्रज्वलन के और केवल 1 मिनट 34 सेकंड दूर जब अकल्टेशन ख़त्म हो जाएगा। अकल्टेशन ख़त्म होने का मतलब है कि हमारे पास संकेत आने की संभावना होगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी गुंजाइश और बचती है। जब एंटीना को इस तरह से घुमाया जाएगा ताकि वो भूकेंद्र को देख सके। प्रधानमंत्री जी और इसरो उपग्रह केंद्र के भूतपूर्व निदेशक और इस समय स्पेस कमीशन के मेंबर श्री टी.के. एलेक्स जी प्रधानमंत्री के साथ उन्हें हर बारीकियां समझाने के बाद उन्हें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी उतने ही सतर्क हैं जितना इस हॉल में बैठा हुआ हर वैज्ञानिक, बड़ी सूक्ष्मता से उन सारे चेहरों को देखते हुए। ये आंकड़े आपको निश्चित रूप से उत्तेजित करते होंगे ये जान के कि अगला क्षण कौन सा होगा। लगभग 20 सेकंड पूरे होने को 24 मिनट का समय जो है वो प्रज्वलन के लिए निर्धारित है। Yes, Dr. Alok, this is indeed a complex mission, and keeping in mind all the orbital complexities and the challenges the mission presented, the Mars orbiter mission was envisaged and executed. Let's take a quick glance at the mission objectives and the MOM spacecraft configuration which made the journey possible so far. One of the main objectives of the first Indian mission to Mars is to develop the technologies required for design, planning, management, and operations of an interplanetary mission. The technological objectives are design and realization of a Mars orbiter with the capability to survive and perform Earth-bound maneuvers, cruise phase of 300 days, Mars orbit insertion and capture, and on-orbit phase around Mars. Also, the deep space communication, navigation, mission planning and management, and to incorporate the autonomous features to handle the contingency situation. The scientific objectives include exploration of the Mars surface features, morphology, mineralogy, and Martian atmosphere by indigenous scientific instruments. The spacecraft configuration is a balanced mix of design
from flight-proven IRIS INSAT Chandrayaan-1 bus. Improvisations required for Mars mission are in the areas of communication, power, propulsion for the liquid engine restart after nearly a year, and onboard autonomy. The 390 liters capacity propellant tanks accommodate a maximum of 852 kg of propellant, which would be adequate with sufficient margins. The liquid engine or 440 Newton thrust is used for orbit tracing and Martian orbit insertion. Additional flow lines and valves have been incorporated to ensure liquid engine 440 Newton engine restart after 300 days of Martian transfer trajectory to take care of fuel migration issues. 8 number of 22 Newton thrusters are used for wheel desaturation and attitude control during maneuvers. Accelerometer is used for measuring the precise incremental velocity, the delta V, and for precise burn termination. Star sensors and gyros provide the attitude control signals inputs in all phases of the mission. To compensate for the lower solar irradiance, the 50% to 35% compared to Earth, the Mars orbiter requires 3 solar panels of size 1800 by 1400 mm. Single 36 ampere-hour lithium-ion battery will be sufficient to take care of eclipses encountered during Earthbound phase and in Mars orbit. The communication dish antenna fixed to the spacecraft body of diameter 2.2 meters was arrived at after the trade-off study between antenna diameter and accommodation within the PSLV XL envelope. Onboard autonomy functions were incorporated as the large Earth-Mars distance does not permit real-time interventions. This would also take care of onboard contingencies. Let us now have a look at the 5 payloads on the spacecraft. जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। इस समय हम प्रज्वलन समाप्ति की घड़ियां कुछ ही शेष 1 मिनट 10 सेकंड दूर। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता चलूं कि उस उपग्रह में 5 प्रदाय भार 5 पेलोड लगे हुए हैं। LAP लैब लाइमन अल्फा फोटोमीटर, यह ऊपरी वातावरण में ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोजन की मात्रा मापेगा। MSM मीथेन सेंसर फॉर मैप मार्स, यह मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा को मापेगा तथा इसके स्रोतों का मानचित्र बनाएगा। मेनका मार्शियन एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, यह एक चतुर्ध्रुवी द्रव्यमान विश्लेषक है जो एक्सोस्फीयर में अनावेशित कण संरचना का विश्लेषण करने में सक्षम है। MCC मार्स कलर कैमरा, यह दृश्य स्पेक्ट्रम में चित्र खींचेगा जिससे अन्य उपकरणों के काम करने के लिए संदर्भ प्राप्त होगा। TIR थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यह मंगल की सतह का तापमान तथा उत्सर्जकता की माप करेगा जिससे मंगल के सतह की संरचना तथा खनिजकी का मानचित्रण करने में सहायता मिलेगी। हम इस समय प्रज्वलन समाप्त के बहुत ही नज़दीक केवल, और इस समय 24 मिनट 16 सेकंड का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है, बर्न एंड हो चुका है और इस समय रिवर्स रोटेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। During the burn, the orientation of the spacecraft is maintained such that the liquid engine is always pointed against the velocity direction of the spacecraft. Now, what is this reverse rotation? This rotation of the firing does not allow the communication antenna to look towards the Earth. Hence, when the burn ends, as of now, the onboard sequencer senses it and starts the reverse rotation for the spacecraft. The spacecraft orientation targeted with this rotation is to make the medium gain antenna point towards the Earth so that spacecraft telemetry can be received at the ground station. The reverse rotation is expected to start at around 7:44 a.m. after the burn end. So that is the nominal time. The entire reverse rotation takes about 10 minutes. However, the MGA has a field of view of plus minus 40 degrees. This implies that we need not wait for the MGA center or bore site to point towards Earth.
The anxious moments of waiting will be shortened from 10 minutes to 6 minutes after burn end, when the MGA field of view edge will enable communication with the Earth. The telemetry would be made on with 250 bits per second data rate. Till this time, battery would have been supporting the spacecraft subsystems. In this orientation, after the reverse rotation, the solar panels would also start generating power, and this all will happen around 8 AM. बहुत ही शीघ्र लगभग 1 मिनट 45 सेकंड के बाद अकल्टेशन की भी समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद 3 मिनट 45 सेकंड में एंटीना पृथ्वी की ओर घुमा दिया जाएगा। ये मीडियम गेन एंटीना है जिसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चौड़ा है और इस कारण से वो पृथ्वी की ओर संकेत भेज पाएगा और संकेत मिलने के पश्चात ही हम पूरी तरह से आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस समय हम प्रज्वलन से 26 मिनट 43 सेकंड दूर पर आ चुके हैं और सारी निगाहें कुछ महत्वपूर्ण 2 इवेंट्स पे टिकी हुई, एक अकल्टेशन समाप्त और दूसरा एंटीना पृथ्वी की ओर जब घूमेगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए। We are approximately 3 minutes away from the predicted time when the spacecraft telemetry would reach the ground station, and we would be able to see in real time what has happened and the burn parameters. Of course, this is expecting a very nominal scenario where the lamp and all the thrusters have fired as expected. दरअसल ये सारी जानकारियाँ उपग्रह स्वायत्तता के हिसाब से अपने आप इन सीक्वेंसेस को, इन गतिविधियों को लोड करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है और इस तरह से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के सारी गतिविधियां अबाध रूप से जारी हैं। इस समय अकल्टेशन समाप्त हो चुका है और हम केवल एंटीना के घुमाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो भी ऑटोमेटिक होगा क्योंकि ये भी कमांड कंप्यूटर में लोडेड है। केवल हम 1 मिनट 43 सेकंड की दूरी पर इस महत्वपूर्ण क्षण से। हर निगाहें आंकड़ों पर, हर धड़कन बेहद तेज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हर आंकड़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करें। सभी निगाहें केवल उन दृश्यों को देखती हुई जहाँ पे हमें महसूस होता है कि हम इन अपेक्षित आंकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 1 मिनट की दूरी और जब एंटीना भूकेंद्र की तरफ घुमा दिया जाएगा। लगभग आधे घंटे प्रज्वलन के बीत चुके हैं। तरल इंजन ने अपेक्षित रूप से निष्पादन दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अब आंकड़ों को प्राप्ति के बाद उनका अध्ययन करें और तब ये महसूस हो कि हमने कितनी सफलता हासिल की है। केवल लगभग 30 सेकंड और जब एंटीना पृथ्वी की ओर घुमा दिया जाएगा, यही अनुमानित समय है। Before the occult start, we had recorded an accelerometer delta V of 177.4 meters per second. The target delta velocity to be achieved is 1098.7 meters per second. And we are now in the countdown towards reaching the end of the occult period with the antenna. बिल्कुल दर्शकों, यही वो क्षण है जिसकी इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, समूचे भारत को, समूचे राष्ट्र को प्रतीक्षा थी। अब आप इसरो के चेयरमैन की
गतिविधियों को देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री तालियों से बधाइयां देते हुए। ये निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित क्षण है, निश्चित रूप से ऐसे क्षण हैं जिसको समूचा राष्ट्र बहुत लंबे समय तक याद करेगा। हम उस क्षण का वेट करेंगे जब प्रधानमंत्री हमें, आपको, समूचे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे बीच उनकी उपस्थिति, सारे महानुभावों की उपस्थिति निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेसर यशपाल जी, श्री सदानंद गौड़ा जी, महामहिम राज्यपाल श्री वाजूभाई वाड़ा जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री श्री आनंद कुमार जी, मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मुनिराजू जी, एमएलए, सभी की उपस्थिति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी ने हमें हमारे इन पलों को निश्चित रूप से यादगार बना दिया है। ये ऐसे क्षण हैं जो हमारे लिए बहुत लंबे समय तक यादगार बने रहेंगे। प्रधानमंत्री अब हमारे बीच हमारे उत्साहवर्धन के लिए, आपको संबोधित करने के लिए बहुत ही जल्दी पोडियम तक पहुंचने वाले हैं। ये परियोजना निदेशक श्री अरुणन जी। And you can see the excitement among all the scientists. They are all having beaming faces, smiles from ear to ear, and congratulating each other on the performance of this much awaited event, the Mars orbit insertion. You can imagine the Mars orbiter mission near the Mars planet after this Mars orbit insertion maneuver. The result of the hard work of the entire MOM team, the entire organization, and so many people associated with this event. वरिष्ठ वैज्ञानिक आपके सामने, इनका मार्गदर्शन, कई वैज्ञानिक, शायद एक का नाम लेना भी मुश्किल हो, उनके अथक परिश्रम ने, उनकी कल्पनाओं ने, उनकी अभिकल्पनाओं ने इस समूचे सपने को साकार कर दिया है। हमारे लिए, आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए। भारत पहला ऐसा देश होगा जो अपने प्रथम प्रयास में इस मंजिल तक आ पहुंचा है। लोड ओनली स्टेप 1। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर all the scientists from all the different subsystems, all the different centers of the organization who have worked as a team, who have contributed to this eventful and mission from the very conceptualization to this day, to this moment, and each congratulating each other, sharing the exhilaration and the exuberance which you can see among all the people involved, among all the entire team, can be visible. This is the project director, Sri Arunan. It's a dream. It's a dream which the entire community has dreamt for the last so many months. एक सपना हकीकत में तब्दील हो गया, एक आरज़ू लोगों की जो धीरे धीरे सच का जामा पहन के आज आप सभी के सामने आ गई। ये ऐसे क्षण हैं जिसे हम आप वर्षों तक याद रखेंगे। लाल ग्रह के करीब, बहुत करीब पहुंच चुके हम। इसके बारे में आप सारी जानकारी फेसबुक पर, ट्विटर पर, वेबकास्ट के जरिए और इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्साहवर्धन के लिए देश के जो लोग हमारे बीच आए, हम उनके कृतज्ञ हैं। हर वैज्ञानिक, हर अभियंता, हर इंजीनियर, छोटा हो, बड़ा हो, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए, यही इसरो का कल्चर है और इसी के सहारे हमने एक लंबी यात्रा सफलताओं की पूरी की है। निश्चित रूप से
मिशन डायरेक्टर श्री केशवराजू जी, जिन्हें सभी बधाइयां देते हुए लगता है जैसे सब ने आपस में एक दूसरे को बधाइयां देने का ये सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं लेता। हम अपने सारे देशवासियों को इसरो की तरफ से बधाइयां देते हैं। हम सारी रात अभियंताओं को देखते रहे, एक मजमा सा लगा रहा, एक खुशी चारों तरफ दौड़ती रही। लगता ही नहीं कि कब सूर्यास्त हुआ कल का और आज का सूर्योदय कब हो गया, कब इतनी रोशनी बिखर गई जिसकी किरणों ने सारी परेशानियां, सारी थकान मिटा दी। थकान 10 महीनों की, 300 दिनों की, लगातार 3 शिफ्टों में काम करते वैज्ञानिक कड़ी निगाह बनाए हुए, और उन्होंने उपग्रह को इस मकाम तक पहुंचा दिया। हम उनका स्वागत करते हैं उनके संबोधन के इंतजार में। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। India has successfully reached Mars। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। History has been created today. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. I congratulate all ISRO scientists as well as all my fellow Indians on this historic occasion. और मैंने पहले ही कहा कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज मुझे इनके बीच आकर के अभिनंदन देने का अवसर मिला है। और अब देखिए इसकी क्या कमाल है। ट्रैवलिंग एन इनक्रेडिबल डिस्टेंस of more than 650 million kilometers, यानी कि करीब करीब 65 करोड़ किलोमीटर की यात्रा
we have gone beyond the boundaries of human enterprise and imagination. We have accurately navigated our spacecraft through a route known to very few, and we have done so far from a distance so large that it took even a command signal from Earth more time to reach it than it takes sunlight to reach us. यानी कि सूरज की किरण को हमारे पास पहुंचने में जिस उससे भी ज्यादा समय यहां से हमारे वैज्ञानिक उसे कुछ कहते हैं कि ये करो, उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। यानी कितनी धीरज के साथ कमांड देने के 12-15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, यार ठीक गया कि नहीं गया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यह बड़ा कठिन होता है। अरे हम भोजन की थाली पे बैठते हैं, खाना में परोसने में देर होती है तो भी इधर उधर हो जाते हैं। तो इतने आप में इतना डिस्टेंस, उसके बावजूद भी जिस धैर्य के साथ द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट अस, of the 51 missions attempted across the world so far, a mere 21 had succeeded, but we have prevailed. दुनिया में सबको सफलता नहीं मिली, बहुत कम मिली, और पहली बार में तो किसी देश को नहीं मिली। भारत के वैज्ञानिक को, भारत को ये पहली बार सफलता मिली है। With today's spectacular success, ISRO joins an elite group of only 3 other agencies worldwide to have successfully reached to the red planet. India, in fact, is the only country to have succeeded in its very first attempt. We put together the spacecraft in record time with a mere 3 years of first studying its feasibility. सिर्फ 3 साल में, यह छोटी बात नहीं है। हर हिंदुस्तानी आप लोगों के लिए गर्व करता है, नाज होता है, वैज्ञानिकों के लिए नाज होता है। But it is indigenously in a pan-Indian effort, stretching from Bangalore to Bhubaneswar and Faridabad to Rajkot. हमारे यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला वो राजकोट के हैं, और इस मार्स का एक इंस्ट्रूमेंट राजकोट में बना था, और मैं अहमदाबाद इसरो में बार बार जाता था। मेरा मन करता था क्या कर रहे वैज्ञानिक बेचारे, एक लैब से बाहर नहीं निकलते, तो कोई तो जाए मिलने के लिए। तो मैं जाता था, और तब मुझे पता चला कि मीथेन गैस का सेंसर वहां बन रहा था, और दूसरा वहां कैमरा बन रहा था, और शायद वो दोनों काम उस समय मुझे बताया गया था। और शायद दुनिया में मीथेन गैस की जानकारी देने का पहला काम ये आपके प्रयत्नों से होगा। तो मैं जब ये अहमदाबाद के इसरो में देखने जाता था, तो मुझे वहाँ के वैज्ञानिक, हमारे गोस्वामी जी यहाँ है, वो सब समझाते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यूज्ड ए स्मॉल रॉकेट एंड पेलोड टू रिड्यूस द कॉस्ट इवन वाइल इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑलरेडी चैलेंजिंग मिशन। मैंने पिछली बार जब गया था श्रीहरिकोटा में, तब मैंने कहा था कि अमेरिका की हॉलीवुड जो फिल्म बनती है, मूवी, उससे भी कम खर्चे में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। यानी कितनी बारीकी से इंडिजीनियस चीजों को जोड़ करके, छोटे छोटे लोगों की मदद लेकर के इतना बड़ा मिशन पार किया गया है। These are all accomplishments that will go down as landmarks in history.
Uncertainty is a part of the journey. Or every explorer who seeks to push boundaries, the hunger of exploration and the thrill of discovery are not for the faint-hearted. मेरे सामने दो प्रस्ताव थे, मैं आज ये रहस्य खोल दूं। जब ये आज सुबह मैं कहाँ रहूं, तो मुझे बताया गया सब साइंटिस्ट साहब ये बड़ा कठिन काम है, दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ है, सफल होंगे नहीं होंगे, आपको बुलाना न बुलाना हमें जरा दुविधा है। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर विफलता आती है तो मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है इन वैज्ञानिकों के बीच आने की। और यश तो लेने के लिए सब आते हैं, लेकिन काम भी तो मंगल था, और जब काम मंगल होता है, इरादे मंगल होते हैं, तो मंगल की यात्रा भी तो मंगल होती है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक भी था और समय भी मिलता था, तो मैंने एक बार लिखा था, वैसे लिखा तो गुजराती में है लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी में बता देता हूँ। मैंने लिखा था कि अगर विफल होते हैं तो आलोचना के शिकार होते हैं, और सफल होते हैं तो ईर्ष्या के शिकार होते हैं। गुजराती में मैंने लिखा था, सफल थई निष्फળ જઈએ तो टीका पात्र અને सफल થઈએ तो ईर्ष्या पात्र। आज हम सफल हुए हैं और इसलिए सफलता के साथ नई चैलेंजेस भी आती है, और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है, इन वैज्ञानिकों में है। Innovation, after all, by its very nature, involves risk. As you are trying to do something which has not been done before, it is a leap into the dark. Humanity would not have progressed if we had not taken such leaps into the unknown, and space is indeed the biggest unknown out there. कभी कभी लोग सोचते हैं रिस्क क्यों लें? मुझे बताइए, पानी में गए बिना तैरना सीखते हैं क्या? रिस्क लेना ही पड़ता है, और सफलता से बड़ी ताकत तो होती है रिस्क लेने के निर्णय की मोमेंट, क्योंकि एक अंधेरे में पैर रखना होता है और वो निर्णय करने का सामर्थ्य। और मुझे तो अटल जी ने जब कहा था हमें चंद्र पर जाना है, वो ये हिम्मत होती है, और तब जाकर के लोग लग जाते हैं। नो वन रिप्रेजेंट्स द zeal फॉर एक्सप्लोरिंग द अननोन मोर देन अवर स्पेस साइंटिस्ट हियर एट इसरो। थ्रू योर ब्रिलियंस and hard work, you have made it a habit of achieving the impossible. अब मेरे इसरो के वैज्ञानिकों को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसे आदत ही लग गई है। You have developed self-reliance across critical domains, often in the face of hostile circumstances. Every generation of our scientists has groomed the next homegrown lot. मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है, मैं जितनी बार आप लोगों के बीच में आया हूं, हर पीढ़ी एक नई पीढ़ी को तैयार करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूं कितने यंग साइंटिस्ट मेरे सामने खड़े हैं। पुरानी पीढ़ी ने इनको तैयार किया और ये नई पीढ़ी को तैयार करेंगे।
और यही परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, एक प्रकार से हमारे देश की विशेषता रही है, जो मुझे आज इसरो में महसूस होती है। इन सीनियर मोस्ट वैज्ञानिकों ने जो परंपरा बनाई है पिछले 50-60 साल में, वो आज भी आगे बढ़ रही है। इस कल्चर के लिए भी, इस परंपरा के लिए भी आप सभी वैज्ञानिक बहुत बहुत इस उत्तम परंपराओं को निर्मित करने के लिए अभिनंदन के अधिकारी है। दो योर अचीवमेंट्स, यू हैव ऑनर्ड आवर forefathers and inspired our future generations. You truly deserve all the love and respect you get from graceful nation. We Indians are a proud people. Despite our many limitations, we aspired for the best. The success of our space program is a shining symbol of what we are capable of as a nation. Our space program has been an example of achievement which inspires the rest of us to strive for excellence ourselves. Moreover, space exploration requires cutting-edge expertise across diverse disciplines. A successful space program thus generates applications across multiple domains. Our efforts, in particular, have historically focused on the ultimate objective of nation building, of translating space technology into space applications. मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मेरा अनुभव है, आप वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में एप्लीकेशन करें, उसको अप्लाई करें, तो हम जीवन बदल सकते हैं, पूरा गवर्नेंस बदल सकते हैं, पूरी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, हमारी गति तेज कर सकते हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, स्पेस साइंस के द्वारा हो रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रयास, ये हमारे देश की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पीड ऑफ अचीवमेंट्स, इन सब में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का सामर्थ्य रखते हैं। डिलीवरिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस फास्टेस्ट फोर्टनर टू द रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, deepening our governance, strengthening our economy, and improving our lives. We also have a great legacy and responsibility to live up to our ancestors, had helped the world understand the mysteries of the heavens, grasp the idea of shunya or nothingness, map spatial knowledge such as the rotation of the earth, motion of planets, and occurrence of eclipses. सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे अनेक महापुरुषों ने हमें इस शास्त्र का ज्ञान दिया था, हमें शून्य दिया। सारे जगत को आज यही तो शून्य है जो गति देने का कारण बन गया है, विज्ञान की खोज का आधार बन गया है। यानी कोई ऐसा विषय नहीं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रास्ता बनाकर न रखा हो। एक प्रकार से ये प्रयास हमारे उन महान ऋषियों को, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनको एक बहुत बड़ी, उनके सम्मान में ये दी गई भेंट सौगात है। और ये काम हजारों साल के बाद की इस पीढ़ी ने दी है। और इसलिए इस परंपरा को निभाने के लिए हम स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये महान काम लैब में बैठे हुए दिन रात अपने सुख छोड़ करके कुछ कर दिखाने की तमन्ना वाले वैज्ञानिकों के द्वारा होता है। मॉडर्न इंडिया मस्ट कंटिन्यू,
playing this leading role of Jagat Guru Bharat. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं देख रहा हूं मेरी भारत माता फिर एक बार विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगी। ये कैसे करेगी? आप ही के लोगों के तो पुरुषार्थ होने वाला है, हमारे देश की युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ से होने वाला है। चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो, चाहे मजदूरी करना गरीब व्यक्ति हो, या वैज्ञानिक की तरह लैब में बैठ करके तपस्या करने वाला ऋषि तुल्य जीवन हो, यही तो है जो भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी कंक्लूड बाय saying that in contrast with the linear nature of Western philosophy, there is no absolute beginning or end. In our Eastern understanding of the cosmos, there is only a continuous, unending cycle of dispassionate, detached perseverance. Atalji's vision had inspired us to reach for the moon. The successful Chandrayaan mission in turn led the Mars orbiter mission. This too must become but a base for challenging the next frontier. Let today's success drive us with even greater vigor and conviction. Let us set ourselves even more challenging goals and strive even harder to achieve them. Let us push our boundaries and then push some more. यही मिजाज, इसी उमंग के साथ हम आगे बढ़ें। In the words of गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कहा था, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. मैं फिर एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस वाणी में श्रद्धा करते हुए, भारत जगेगा, भारत जगाएगा और हम सब उस जागरूक भारत को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब वैज्ञानिकों को आपके पुरुषार्थ और परिश्रम के लिए, आपकी प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब गर्व करें हमारे इन वैज्ञानिकों की सिद्धि के लिए। हमारी क्रिकेट टीम अगर एक टूर्नामेंट जीत करके आती है तो पूरा देश नाच उठता है। ये वैज्ञानिकों की सिद्धि उससे भी हजारों गुना बहुत बड़ी है। सालों की तपस्या के बाद पाई हुई सिद्धि है। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से जुड़ी हुई ये सिद्धि है। आइए मेरे देशवासी, कल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, शुभ शुरुआत हो रही है। मंगल 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 होना तय है, और जब मंगल मंगल होना तय है तो इस मंगल की यात्रा हमें और मंगल करने की प्रेरणा देती रहेगी। आज पूरा हिंदुस्तान उन वैज्ञानिकों के सम्मान में आनंद उत्सव मनाए। हर स्कूल कॉलेज के अंदर 5 मिनट भी इकट्ठे होकर के तालियों के नाद के साथ हमारे इन वैज्ञानिकों को याद करें, उनका गौरव करें। 125 करोड़ देशवासी इस सिद्धि को अपनी बनाए, आनंद उत्सव मनाए, मंगलमय वातावरण बनाए। यही एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
Mission of Telemetry. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं बेंगलुरु के इसरो सेंटर से, जहां आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद तमाम वैज्ञानिकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आज का दिन वाकई भारतीय विज्ञान के इतिहास के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन अब से कुछ ही देर पहले भारत ने अपना सबसे बड़ा अभियान मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया है। और इसी खुशी में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के बीच मौजूद रहे। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम युवा वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, उनके साथ खुशियों में शरीक हो रहे हैं। नैन्सी। Well, yes, absolutely. ISRO's Mars orbiter mission is a resounding success. India has in fact become the first country in the world to have done so in its first attempt. History has been created. Prime Minister there congratulating, meeting them in person, all scientists, the ISRO team behind this successful Mars orbiter mission. जी हाँ, और आज का दिन वाकई भारतीय वैज्ञानिक इतिहास के लिए बहुत ही अहम दिन है। हम धीरे धीरे आपको विस्तार से बताएंगे इस मंगलयान के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसरो ने इस महत्वाकांक्षी अभियान को कैसे इसकी शुरुआत की। और जिस बात का जिक्र नैन्सी प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे कि जो इसकी लागत है इस पूरे अभियान की, इस पूरे परियोजना की, समय बदल जाता है पर नहीं बदलते वो अमूल्य स्वर्णिम पल जो राष्ट्र की धरोहर बन जाते हैं। मानव समाज के लिए गर्वान्वित ऐसे पलों को हमारा सलाम, हम उनके आगे नतमस्तक हैं। मुझे याद आता है, हम न करेंगे, तुम न करोगे तो परिवर्तन कौन करेगा। इसी परिवर्तन की एक बयार जो 5 नवंबर को बहना शुरू हुई थी, आज अपने चरम तक आ पहुंची और आंधी के रूप में हमें शांत कर गई, दे गई जाने कितने यादगार लम्हे। अगर एमओएम में आज जान होती तो यही कहता कि मेरे सफ़र पे लोग लिखेंगे कहानियाँ, सुन लेना कल ये बातें हज़ारों जुबानियाँ। सारा राष्ट्र आज गौरवान्वित होगा इन क्षणों से। सही अर्थों में एमओएम फास्टर है क्योंकि 18 महीने में निर्माण हुआ है। चीपर है क्योंकि इसकी कीमत मात्र 450 करोड़ रुपए है। बेटर है क्योंकि ऐसे प्रदाय भारों को हमने बहुत कम समय में निर्मित किया है। मैं प्रधानमंत्री को इसरो की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि महोदय, अब मार्स ऑर्बिटर मिशन के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको और समूचे
लीडरान को धन्यवाद देते हैं। हम राष्ट्र की उम्मीदों पर खरे उतरें इसी आकांक्षा में। Oh yes, I totally echo your sentiments, Dr. Alok. 24th September 2014 will be marked as a golden day in the annals of space history. The first time ever that a nation has reached Mars in its maiden attempt. Of course, success is sweet, but its secret is sweat. And the result is there for all to see. With the major mission objectives achieved, we look forward to the next step, the data from the payloads. As the new entrants, Mars Orbiter Mission and MAVEN keep each other company, we hope that the entire humankind will be enriched further by these missions. जय हिंद और हम बहुत बहुत बधाइयों के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। जय हिंद। Thanks for joining us. Jai Hind. So that was the live telecast from ISRO's Mission Control Center in Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi, they're witnessing that historic event. Of course, now the Mars Orbiter mission is a resounding success. Mangalyaan has successfully reached the Martian orbit. With this, India has now become the first country in the world